We'll start in a couple of minutes. So let's start. First of all, welcome everybody who has chosen to take this course, and from their busy schedule they have chosen to study and get more clarity about the markets, how to pick stocks, how to get entry points, exit points, all the how to have stop losses, when to make entry, when to make exit, what are overbought situations, what are underbought situations. You all must have been doubts about that, but you never got those answers. But in this course, I will try to make clear the power of technical analysis to you, and how that will help you to identify winning trades, winning trading ideas through all the various technical analysis tools that we'll study in this course. This course will be around 14 to 15 days in total. I may extend it further if the learning is not over till then for the theoretical part, and then there will be a practical 3 to 4 excuse me, 1 to 2 months will be practical training with the live market training also, and with the softwares and everything. We will study the various ups and downs of the market and how to profit from it. So it will be a very extensive course for you guys. I will request everybody to, today is a theoretical class, so I will request everybody from tomorrow to open a TradingView account. Let me show you the TradingView platform. This is a TradingView platform. I hope many people have done it already. You go to TradingView. Then I have already taken a plan here. So you have to register here. After registering here, you can, start using this platform. So this TradingView platform will provide you charts. Like I'll show you a Nifty chart. You just type here Nifty 50 and you get this platform. This is a candlestick chart of Nifty 50. You should take the beginner's plan, the pro plan. 1 month का pro plan ले लीजिए राहुल जी. You take the 1 month pro plan, so that actually the problem is in TradingView, you have, if you want to have more than one indicator, 2, 3 indicators or 5 indicators combined, you cannot use that simultaneously. So for using that simultaneously and do technical analysis professionally, you have to take the TradingView subscription. So you can do that easily from credit card or Paytm or from UPI or any other sources. So you should take the pro plan. मैंने भी pro plan ली. I have taken the pro plus plan, but pro plan is enough for you guys. Yes. You can take the premium subscription which is free for 30 days. And then when you start doing technical analysis in proper way, then you can take the full subscription of the TradingView platform. Let's first be comfortable by using this platform. Then you can when you learn all the concepts, then you yourself will register for this, I'm sure, and you will be well versed with it. So let's start now the Finance 7 Technical Analysis Masterclass, day 1. Technical analysis. What is technical analysis? Just let us understand.
Technical analysis is the study of market action primarily through the use of charts. Charts सबसे ज़्यादा इसमें technical analysis में use होता है. Charts is the basis of technical analysis. All technical analysis, as much theory you read, is done through charts for the purpose of forecasting future price trends. Not only the current situation, to read the current situation, it helps you forecast the future price trends. How to forecast that, we will learn later. Let's just go through the what is technical analysis. The term market action includes three principal sources of information. So what are those three important sources of information in market action? Market action includes price. Second is the volume. It's how much is their buying, selling is happening. How much, by what volume is the buying is happening? By what volume the selling is happening? That is that defines the market action. So price, volume, and open interest. Open interest was for futures and options. So we'll not cover the open interest part, but we will learn about the price and volume action in technical analysis. Now, technical analysis is based on few assumptions. One needs to be aware of these assumptions to ensure the best results. What is the first assumption? Market discounts everything. How does market discount everything? For example, कोई information आई market में कि आज Infosys का result आया है, या कोई Infosys में insider trading हुआ है, या कोई whistle blower ने उस पर कंप्लेन किया है, तो उसका प्राइस एक्शन नेक्स्ट डे मार्केट में डिस्काउंट हो जाता है, राइट? उसका इफेक्ट मार्केट में आ जाता है. तो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि मार्केट प्राइस में सब कुछ होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर चीज. टेक्निकल एनालिसिस का डेफिनेशन ये बोलता है कि मार्केट विल डिस्काउंट एवरीथिंग. डिस्काउंट मतलब सब चीज को एडजस्ट कर देगा. एवरीथिंग, एवरी इफेक्ट इन द मार्केट विल बी एडजस्टेड. एवरी फैक्टर जो भी प्राइस को इफेक्ट करता है वो मार्केट में प्राइस को एडजस्ट हो जाता है. दैट इज टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट. देन इज द हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द व्हाई. इसमें क्या डिस्टिंक्शन है? हाउ मतलब ये बताता है अपने को कि मार्केट कैसे गिरा, मतलब कौन से लेवल पे आया, कहाँ पे सपोर्ट मिला, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, कैसे गिरा मार्केट, कितना स्ट्रेंथ है, कितना नहीं है, कितना वॉल्यूम है, ये सब स्टडी करते हैं. क्यों गिरा, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉल, टेक्निकल एनालिसिस विल नॉट टेल यू. आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ के सोचेंगे कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्यों मार्केट गिर रहा है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से मालूम नहीं पड़ेगा. कैसे गिर रहा है, कितना गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, या क्या सपोर्ट है, कहाँ पे रुकेगा, दैट इज हाउ द मार्केट इज बिहेविंग. दैट टेक्निकल एनालिसिस विल टेल यू. बट व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड, दैट इट विल नॉट टेल यू. दैट इज व्हाई, दैट इज डन बाय फंडामेंटल एनालिसिस. आपको कारण मालूम पड़ेगा थ्रू फंडामेंटल न्यूज. इस न्यूज के कारण ये इम्पैक्ट पड़ा, या ये न्यूज के कारण ये इम्पैक्ट पड़ा, इसका शेयर का रिजल्ट आया तो ये इम्पैक्ट पड़ा. आपको टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं बताता है. टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि मैं वाई को नहीं फैक्टर इन करता, मैं सिर्फ हाउ देखता हूँ कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, उस बेसिस पे मैं अपना बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लूंगा. सो टेक्निकल एनालिसिस फोकसेस ऑन द हाउ. सो फर्स्ट इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट में सब डिस्काउंट हो जाता है. सेकंड इज हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द व्हाई, मतलब कैसे गिर रहा है, क्या बिहेवियर हो रहा है प्राइस का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके वजह कि why it is falling is not important in technical analysis. Third is price moves and trends. All major moves in the market is an outcome of a trend. कोई भी मूव उठा के देख लीजिए, आपको एक ट्रेंड, ना बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, कोई ना कोई ट्रेंड मिलेगा. सो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक assumption ये है कि prices moves in trend, right? The concept of trend is foundation of technical analysis. Okay, so another way to look at it is that once the trend is established, the price moves in the trend direction. मतलब एक bearish trend चल रहा है तो प्राइस bearish trend को फॉलो करता रहेगा. ऐसा नहीं कि bearish trend में अचानक से उठ के बुल रन आ गया. So we have to identify those trends. So market discounts everything is the first principle. Second is how is more important than the why. Then the third is price moves in trends. मतलब uptrend, sideways, downward trend. In this way, the price behaves. Anybody, having any questions during my explanation
or if something is not clear, my voice is not clear, anything, please write your feedback in the chat box so that I can understand and I can stop and explain to you whatever concept you don't understand. Feel free to ask anything you want. Any question is any basic question to basic question हम ऐसे पूछ सकते हैं क्योंकि कोई शर्म नहीं है. This is your class. This is for you to study. You have given time and money to this course, so please feel free and ask questions whenever you want. Now moving forward, the fourth assumption is history tends to repeat itself. Technical analysis context, the price tend to repeat itself. Price will always move in trends. The history में भी वैसा ट्रेंड्स पहले बन चुका है. आज से 20 साल पहले भी कुछ ट्रेंड्स थे. उस हिस्ट्री को डेटा को देखेंगे, हम पहले के डेटा को देखते हैं, तो हिस्टोरिकली वो प्राइस ट्रेंड्स एक इवेंट के टाइम पे एक तरीके से बिहेव करते हैं. तो वो तरीका कभी चेंज नहीं होता है. हिस्ट्री विल ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. दैट इज द प्रेमाइस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि भैया पहले जो प्राइस बिहेवियर होता था बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स कि फेड का पॉलिसी बढ़ गया या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया या कोई और कारण, ये सब कारण रिपीट होते रहते हैं हिस्ट्री और उनका चार्ट्स का पैटर्न एक ही तरह का बनता है. तो अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जितना हिस्ट्री में पीछे जाके पढ़ेंगे उतना टेक्निकल एनालिसिस हम अच्छा कर पाएंगे. राइट. So the four basic assumptions of a technical analysis is market discounts everything. Market का price भाव भगवान है. भाव आपको सब बताता है. भाव will tell you everything about that stock or about the market condition. Second is how is more important than why. कैसे price behave कर रहा है ये बताएगा ना, इसके वजह कि क्यों मार्केट गिरा, क्यों मार्केट बढ़ा, ये नहीं पता. Right. Third is price moves in trend. And the fourth is history tends to repeat itself. Any trend can be anything, Atulji. Trend can be of a stock also, of the market also, of any commodity, anything, foreign currency. हर चीज का एक trend होता है. Everything, every financial asset moves in a trend, whether it be gold, commodities, silver, कुछ भी हो. मतलब बिटकॉइन भी एक ट्रेंड में मूव करता है. हालांकि बिटकॉइन इज इररेशनल समटाइम्स, बट बिटकॉइन इज आल्सो फॉर्मिंग अ ट्रेंड. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ ट्रेंड पॉसिबल. राइट अतुल जी? ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अतुल जी. आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए. Atul ji, you can unmute yourself. I've asked you to unmute so that you can ask a question. Yes, I've allowed you. Yeah, now I understand. Yeah, I'm talking about you're saying about the trend. I understood that. But suppose we are analyzing one particular script. Let's say we are talking about Wipro, for example. So we have to see how Wipro, what is the history of Wipro script, or we're talking about the script in IT sector or in software sector, or market trend as a whole. We have to analyze Wipro's trend only. Wipro only, yeah, that's right. If you are seeing Wipro's trend, then you have to see the Wipro price behavior in the long term, short term, and medium term charts. How it has behaved, I don't have to see the market charts and then compare it with Wipro, then compare Infosys with Wipro, or the simultaneous movement of Wipro with Infosys. ऐसा नहीं करना. Okay, thanks. You have to see the particular shifts movement. Right. Right. Thank you. Okay, you can mute yourself now. Vinti ji has a question. How does FIA buying selling after technical analysis? How can we analyze it? Yes, we will study, Vinti ji, how to analyze the FIA buying or institutional buying selling. How does it affect the market? How does open interest and option chains matter? How can we see the option chain and read and find the boundaries of the market, Vinti ji? We understand that as we proceed to the course. We can, to an extent, by seeing the volume data and seeing the support and resistance prices, we can analyze the FIA buying selling. We can do that with these. So I will teach you this in the course. Generally, the time frame should be anything. If you depends on what you want to do. You want to do intraday,
You want to do 2-3 days swing trading. You want to do monthly swing trading. You are a long term investor and you want to know कि विप्रो या कोई भी शेयर को किस भाव पे लेना है, तो हम वो चार्ट देखेंगे. तो चार्ट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टर you are, whether you are having a short term horizon, intraday horizon, swing trading horizon, scalping, that is few seconds. तो उस पर डिपेंड करता है हम क्या चार्ट देखेंगे. जनरल टाइम फ्रेम इज short, medium, long term, depends on what period you are invested in, right, Aman ji? So उसके basis पे आप charts को देखोगे and you will use those tools, based technical analysis tools, to study those trends. Are we clear? Okay, let's move forward. So we understood what is technical analysis in general and what are the assumptions technical analysis has. Now, the difference between technical and fundamental analysis. It's very simple. Technical analysis is the study of charts, and fundamental analysis is the study of figures, facts, ratios, balance sheet data, the company's results, earnings, prices. All these things are included in the fundamental analysis. And technical analysis में price behavior को study करते हैं. Price behavior, public human psychology, the psychology of the markets, the psychology of a person, those kind of things are studied in technical analysis. So the fundamental studies the cause of the market movement, while the technical studies the effect. Technical से मालूम पड़ता है वो price में क्या effect आया, वो effect कैसा है, bearish है कि bullish है, कि support के पास है, resistance के पास है, कि trending market है कि नहीं trending market है, वो technical बताता है, right? और फंडामेंटल बताता है कि वो कारण क्या है उसको वहां पे उस प्राइस को आने का या नहीं आने. तो ये डिफरेंस है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में. यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मार्केट मूव्स द फंडामेंटल्स डोंट एक्सप्लेन और सपोर्ट व्हाट द मार्केट सीम्स टू बी डूइंग. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपको स्टडी करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीखना है. इसका मेन कारण ये है कि जब मार्च 2020 में व्हेन द मार्केट ड्रॉप टू 7500, एट दैट पॉइंट everybody was bearish, everybody thought कि market खत्म हो गया है. Fundamentally there was no reason to invest in the market, but there were certain technical indicators that suggested, yes, those suggested, although I myself picked the rally after 5 to 600 points rally. मतलब 7500 बॉटम बना दिया, उसके 3-4 दिन बाद जब 8500 600 बनाया, तब मेरे को ट्रेंड क्लियर हुआ कि मार्केट हैज करेक्टेड एनफ एंड नाउ इट विल रैली. फंडामेंटली नथिंग वाज विजिबल कि मार्केट टर्न अराउंड हो गया, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स में ये शो हो गया कि मार्केट इज टर्निंग अराउंड. टेक्निकल से अगर आप यूज करेंगे तो आपको बॉटम और टॉप का पहले मालूम पड़ेगा, और फंडामेंटल से आपको बाद में जब वो ऑलरेडी वहां से गुजर जाएगा उसके बाद आपको फंडामेंटल फैक्टर्स मालूम पड़ेंगे कि क्यों गुजरा. तो टेक्निकल स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि हमको कभी भी बेयर मार्केट के बाद एंट्री लेना है कि कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ बॉटम बनेगा, और बुल मार्केट में कब निकलना है, व्हेन इज द टॉप, व्हेन इज द ओवरबॉट सिचुएशन. ये सब हम लोग 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आफ्टर स्टडिंग द टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स वी कैन प्रेडिक्ट दैट, एंड 80-70% ऑफ द टाइम we can predict the tops and the bottoms of the market, and we can be safe, or we can stay on the sidelines, not invest, right? Sideways market है तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर बहुत ओवरबॉट है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स से हम ये पकड़ सकते हैं. सो दैट इज व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल्स अपनी जगह है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से सबसे पहले ट्रेंड मालूम पड़ता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेंड मालूम नहीं पड़ता है. फंडामेंटल एनालिसिस बाद में मालूम पड़ेगा जब कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ गए मार्च के बाद, तो मालूम पड़ा कि क्यों मार्केट गिरा. तब तक मार्केट को मालूम नहीं कि मार्केट टर्न अराउंड कब करेगा, बट टेक्निकल से हम लोग को समझ में आ गया कि मार्केट्स विल टर्न अराउंड. दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. Both the technical and the fundamental can be used in the first phase of forecasting process. However, the questioning of timing of determining specific entry and exit points is almost purely technical. आप फंडामेंटल से पता कर सकते हैं कि क्यों वो स्टॉक खरीदना है, राइट? क्या वैल्यू है उसका, कौन सा प्राइस सही है. टेक्निकल से मालूम पड़ेगा आपको कब किस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना है और उस शेयर से कब निकलना है, राइट? और उसमें टाइमिंग जो एस्पेक्ट है वो टेक्निकल से प्योरली मालूम पड़ता है.
फंडामेंटल से यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द वैल्यूएशंस and idea that you can enter in the stock. But what point to enter, when to exit, should you exit or not to exit, whether to keep on holding, that which questions people ask on CNBC and CNBC आवाज other channels कि मैंने ये भाव पे ले लिया, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैंने 5 साल पहले ये स्टॉक लिया था, अब मेरे को निकलना चाहिए क्या? तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस से मालूम पड़ता है कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है, विद द पावर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कि क्यों हमको रखना है वो स्टॉक और क्यों नहीं, क्यों निकलना है, ये मालूम पड़ता है, राइट? तो टेक्निकल फंडामेंटल में ये फर्क है, टेक्निकल इज अ फास्टर इंडिकेटर देन द फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल से आप जल्दी पकड़ सकते हैं कि बॉटम और टॉप कब बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग बाइंग डिसीजंस एंड वेरी प्रॉफिटेबल आल्सो इफ यू यूज टेक्निकल एनालिसिस in a proper